Early morning students. Already we have started chapter number 6. Two definitions we have studied in last lecture. Today we'll get idea about more concept of this chapter. Among them first is adjacent angles. See here two angles are formed. Angle ABD, angle DBC. We know very well that every angle is formed from two arms. In this angle ABD, two arms are BA and BD. है ना? The arms of angle DBC is BD and BC. Here both the angle have one common arm, that is BD. If two angle have common arm, then that two angle are called adjacent angles. Once again, this angle ABD have two arms BA, BD, and arms are one kind of race. Same angle BDC formed by two arms BD and BC. So both angle have one common arm, that is BD. So if two angles have one common arm, then they are said to be adjacent angles. Okay, so here angle ABD and angle DBC are adjacent angles because they have common arm BD. Okay, next is linear pair. See, if we define linear pair, then it will be like this. Two angle which have one common arm, and another two arms are opposite rays, then such angles are called linear pair. Angles have one common arm and other two arms are opposite rays, then such angles are called angle of linear pair, like angle ABC and angle ABD, and sum of two angle who form linear form, sum of two angle of linear pair is always 180 degree. If two angles form linear pair, then their sum will be 180 degree. Okay, go through these definitions.
Clear? Next, vertically opposite angles. Say. Here two angle form. Check it out, angle AOC and angle BOD. So these two are called vertically opposite angles. So how can we define vertically opposite angles? If two angle form which have both arm as opposite rays, then they are said to be vertically opposite angles. Check it out. In this angle AOC, arms are OA and OC. In this angle BOD, the arms are OB and OD. So opposite ray of OA is OB, opposite ray of OC is OD. So OB is opposite to OA and OC is opposite to OD. So both angles have opposite arms. If two angles have opposite rays as arms, like OA opposite ray OB, OC opposite OD, then they are called vertically opposite angles. And vertically opposite angles are equal. So this angle AOC will be equal to angle BOD. These two angles equal and these two angles equal. Angle AOD will be equal to angle BOC. Okay, that's it. So here all logics, all definition of this exercise 6.1 is over. Okay, go through it. Then we start theorem 6.1. See, this is the most important theorem, theorem 6.1, most important. Generally it is asked in exam. See, theorem consists of three parts: given, to prove, and proof. After if whatever thing we have, that is called given, and after then the content given, it is to prove. So after if we have two lines intersect each other, so here we have to take two lines which intersect each other. So I will take two line AB, first line AB,
and second line CD, and both intersect at O. Given two lines AB and CD intersect O, then vertically opposite angles are two pair of vertically opposite angles are formed. These two. So always whatever angles name we give ना, that alphabet remain at the center. अगर मुझे ये एंगल का नेम देना है तो O है वो बीच में रहेगा. तो what will be name of this angle? Give name to this angle AOC. And see, so vertically opposite angle of this is, ईश्वर vertically opposite angle form V. देखो सीधा V, उल्टा V, ये उल्टा V है. Give name to this angle BOD. Even you can write DOB also. Second, these two are also vertically opposite angles. Name of these angles are, what is name of this angle? At that time left hand side which angle is formed? This one. So name of that angle AOD. Right hand side this one BOC. So what do you want to prove? We want to prove that these vertically opposite angles are equal. That means now here instead of and what we'll write equals to. AOC equals to BOD and AOD equals to BOC. This thing we want to prove. So we'll not prove both the results, we'll prove this only. Okay, AOC equal to BOD. AOC and BOD. See, we know very well that angle form on the straight line. If two angles form on a straight line, then they are linear pair. If two angles form on a straight line, then they are said to be angle of linear pair. Check it out. Simple, बहुत simple है. देखो AOC है, बराबर है. इसका स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है? ये वाली. ये एक स्ट्रेट लाइन आप पकड़ लो, बहुत इजी है. देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली. उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? देखो AOC एंड AOD. अभी हमने समझ. और देखो एक बात याद है, लीनियर पे टी बनाता है. क्या बनाता है? टी. तो उल्टा टी बन रहा है. देखो टी ऐसा भी हो तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री. टी ऐसा ही बन रहा है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री. टी ऐसा बन रहा है तो भी इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री. तो क्या बन रहा है? बन रहा है टी. देखो, और ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं ना. स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन तो ऊपर ये दोनों एंगल फॉर्म होंगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री. ओके, लेट अस राइट नेम ऑफ दिस एंगल्स. एंगल, नेम ऑफ दिस एंगल AOC, this one AOD equals to 180 because the two angles which form linear pair, their sum is 180. Simple reason we going to write form a linear pair. ठीक है. So this straight line we have considered. On this straight line above we have written two angles. Now another straight line we'll take. So this is another straight line. On this straight line also we'll write one pair of angle. लेकिन ये वाली स्ट्रेट लाइन में ऊपर लिया था, अभी वाली स्ट्रेट लाइन में डाउन लेंगे. ये प्रूव करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे याद रखा जाए. फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर के एंगल्स लिए थे, सेकंड स्ट्रेट लाइन में डाउन नीचे के दो एंगल लेंगे, यानी दिस टू एंगल्स. सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस एंगल? AOD.
plus this one. We have considered this line of this straight line. These two angles are formed. First AOD and second is BOD. 180 degree. Reason? Form a linear pair. This will give equation number first and equation number second. So, by comparing equation first and second. See, whenever we compare any two equation, the same side gets cancelled. Here right hand side 180, for this also right hand side 180. So they both will get cancelled. जब भी दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जो साइड उनकी इक्वल है उनको कैंसिल करना है, और जो बाकी जो बचा ना उसके बीच में इक्वल टू डाल दो. तो बाकी कौन बचा? ये वाला. अब इसके इक्वल टू क्या आएगा? ये वाला, क्योंकि हम कंपेयर करें. कंपेयर करना मतलब क्या? सेम साइड को कैंसिल करके जो बचा उसके बीच में डाल देने का इक्वल टू, यानी ये इक्वल टू ये. देखो, फ्रॉम बोथ साइड AOD will cancel. AOD will cancel because on both sides of equals to, if same angles are there, we can cancel it out. So left hand side angle AOC left and right hand side angle BOD left. We have proved. This thing we want to prove na, AOC equal to BOD, that we have proved. But it is also left to prove. But लेकिन जैसे हमने AOC equal to BOD प्रूव किया वैसे ही हम AOD equal to BOC प्रूव कर सकते हैं. तो प्रूव नहीं करना, हम लिख देने का. Similarly, we can prove angle AOD equals to angle BOC. So here theorem is proved. Hence proved. Once again, see, in exam, if it is asked, then this statement only will be given. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. That's it. You have to draw diagram by yourself. You have to write given, to prove, proof. Everything have its marks. Everything have marks. This is proof. See how to write given. Given का मतलब जो दिया है वो. And whatever given after if. Whatever statement given after if, it is called given. Two lines intersect each other. तो मतलब गिवन में आपको दो लाइन लिखनी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. तो विद टू लाइन वी हैव कंसीडर लाइन AB एंड लाइन CD का इंटरसेक्ट करते हैं O पे. टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म लिखने हैं जो फॉर्म होते हैं सिंपल, उल्टा V सीधा V. ये सीधा V AOC, उल्टा V BOD. ठीक है. अब जैसे ऊपर नीचे हमने V बनाया वैसे लेफ्ट राइट भी तो बना सकते हैं. देखो ये लेफ्ट साइड V AOD, राइट साइड भी BOC, AOD BOC, यानी ये दोनों एंगल लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं. दिस टू एंगल आल्सो फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये गिवन हुआ जो दिया है. अब प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है. एंड की जगह में क्या प्रूव करना है? इक्वल्स टू. ये भी एंड की जगह इक्वल्स टू. जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिखा जाता है. प्रूफ बहुत इजी है. प्रूफ स्ट्रेट लाइन ले लेने के, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाले दो एंगल लो, सेकंड स्ट्रेट लाइन में नीचे वाले दो एंगल लो. इफ आई कंसीडर दिस स्ट्रेट लाइन देन आई विल कंसीडर दिस टू एंगल AOC plus AOD. So they both form linear pair. So sum of linear pair is 180 degree. Reason. Now if I consider this straight line, then downside these two angle form AOD BOD. They also form vertically linear pair. Sum of these two angle also 180. We'll compare both equation. See, when we compare both equation, whatever sides are same they get cancelled. देखो cancel. बाकी जो साइड बची उसके बीच में डाल देने का इक्वल्स टू. सेम साइड कैंसल, सेम एंगल कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड. हियर AOC लेफ्ट, हियर BOD लेफ्ट. तो वी हैव प्रूव्ड दिस फर्स्ट रिजल्ट. नो नीड टू प्रूव सेकंड रिजल्ट. सिंपल वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड वन. Hence it is proved. 4 mark theorem it is. Go through it.
This theorem you have to write 3 times in homework. How many times? 3 times. And I tell you ki revise every day this theorem as well as all the concept that I taught you. Then only you will be able to understand the numerical or the sums of this exercise 6.1. Okay. So let's end this lecture. Bye. Have a safe day.